Welcome back to the Bishop School Pre-Primary Standard Junior KG. Today we are having English writing. Before we start with our writing exam, let's recite our school prayer. Stand in your places, join your hands and close your eyes, and let's recite our school prayer. Children, repeat the prayer after me. Almighty God, grant grace to the members of the school to be sincere in work, play and prayer, so that teachers and thought learning from each other may become more fit for their service and the service of their fellows. Okay, children, you may open your eyes and sit down. Hello parents, please follow the instructions. Today we are having English writing exam and our children knows to write English writing exam. As per given in the syllabus and portion, they are much capable of writing. We have just asked small letter A to Z, capital letter A to Z and copywriting. They just have to write what is given, the 3-letter words. They have to write 3 times. Parents, you don't have to help your child in writing. You just have to sit beside your child and guide. बच्चों को सब आता है लिखने के लिए, बच्चों को ही लिखने दो. जस्ट बेसिक थिंग एग्जाम में पूछा गया है. स्मॉल लेटर ए टू जेड, कैपिटल लेटर ए टू जेड एंड कॉपी राइटिंग. 3-letter वर्ड्स कॉपी राइटिंग के लिए है. वी हैव ऑलरेडी टॉट देम इन क्लास. बच्चों को सब आता है लिखने के लिए, बच्चों को ही लिखने दो. पेरेंट्स, द एग्जाम इज कंडक्टेड फॉर द चिल्ड्रेन एंड नॉट फॉर द पेरेंट्स. पेरेंट्स को नहीं लिखना है एग्जाम में, बच्चों को ही लिखना है. वी जस्ट वांट टू सी वेदर योर चाइल्ड इज एबल टू राइट इंडिपेंडेंटली और नो. इज दैट क्लियर पेरेंट्स? ओके. हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड. Today you all are having English writing exam. You all are prepared for English writing exam? Yes, come on tell me. आज कौन सी एग्जाम है? इंग्लिश राइटिंग की एग्जाम है. और एग्जाम में क्या पूछा गया है? स्मॉल लेटर ए टू जेड, कैपिटल लेटर ए टू जेड एंड कॉपी राइटिंग. 3-letter वर्ड्स asked in copywriting. So you all are prepared for the exam? Okay, very good. All the best. Open your textbook, children. Let's begin with the English writing exam. Okay. 100 pages book is known as your textbook. 100 pages की book open करो. Previous tests also you all have written in the same book. Now this also exam you are going to write in the same book. First unit test, first term आप लोगों ने इसी बुक में लिखा था और अभी सेकेंड यूनिट टेस्ट भी आप लोग इसी बुक में लिखोगे. सो ओपन योर बुक चिल्ड्रेन. ओके. अभी पेज नंबर 8 निकालो. 8 पेज नंबर निकाला आपने. ओके. नाउ हियर यू आर गोइंग टू राइट सेकेंड यूनिट टेस्ट. यहाँ पर क्या लिखने का है अपनों को? आपको सेकेंड यूनिट टेस्ट. सेकेंड यूनिट टेस्ट. लिखा आपने 8 नंबर पे सेकेंड यूनिट टेस्ट. ओके. नाउ व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू लीव दिस पेज और इसी पेज के पीछे बाजू बैक साइड यू हैव टू राइट स्मॉल लेटर ए टू जेड. Before writing A to Z, here in the corner you have to write today's date. What is today's date? 11 January. आज की डेट क्या है? 11 January. So how are you going to write the date? 11 1 and 1 11 dash 1 dash 22. Okay. What is today's date? 11 January. तो यहाँ पर आपको आज की डेट लिखना है. Once you have written today's date, what you are going to write here in the center? Small letter A dash Z. On this page you are going to write small letters. Second line से आपको चालू करना है. Here you have to write the heading A dash Z.
So you should know to write small letters A to Z. यहाँ से आपको चालू करने का है. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Once you have done L हो गया आपका यहाँ पर. Then M should come on top. M आपका ऊपर आना चाहिए. Here you have to leave little gap. स्पेस छोड़ो. यहाँ पर M लिखो सेंटर में. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. X यहाँ पर आता. Once you have done X, now next letter here you have to write Y and Z. Y and Z. This is your small letters A to Z. आपको आते हैं ना स्मॉल लेटर्स लिखने के लिए? ओके. फिनिश राइटिंग ऑन दिस पेज. स्मॉल लेटर्स A to Z. ओके. नाउ व्हाट यू. ओके. नाउ टेक 9 नंबर. 9 नंबर पे आपको क्या लिखने का है? कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर A डैश कैपिटल लेटर Z. And here you have to put one small dot. So you can begin from second line. Okay. First line पे आपको लिखने का A dash Z. You should know to write capital letters A to Z. You have to start from second line. Capital letter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Capital letter L इधर आने का. नीचे. Once you have done with letter L, M you have to write on top. Capital letter M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. X आपने लिखा इधर. Then Y and Y and Z you have to write on the next line. Capital letter Y and capital letter Z. Okay? Y और Z लिखा आपने. So this is your capital letter A to Z. आपने लिखा capital letter A to Z. Okay. Now what you have to do? You have to take the next page. अभी ये इधर बैक साइड में आपको कॉपी राइटिंग लिखना है. ओके. चलो. राइट अलॉन्ग विद द टीचर. कैपिटल लेटर C, स्मॉल लेटर O, स्मॉल लेटर P एंड स्मॉल लेटर Y. कॉपी लिखा आपने. फिनिश राइटिंग. ओके. नाउ लीव लिटिल स्पेस एंड राइट राइटिंग. स्मॉल लेटर W, R, I, T, I, N, G. Writing. Copywriting. Copywriting. On the first line. Heading लिखना है आपको copywriting. Okay. Now from the second line you have to begin. अभी टीचर आपको words देगी. 3 letter words are there for the copywriting. What teacher said? 3 letter words are going to come for copywriting. Now on the second line write tag. अभी टीचर लिख रही है ना. Same thing you have to copy in your textbook. TAG tag. Write slowly and neatly with good handwriting. TAG tag. Okay. TAG tag. Finish writing. Tag लिखा आपने. Okay. Now leave little space. Write the next word. BAG bag. यहाँ पर सेंटर में लिखो BAG bag. Okay. First word क्या लिखा आपने? Tag. Leave little space over here. Write the next 3 letter word. Bag. Now leave little space and write rag. RAG rag. आपको कौन सा word लिखने का है? Rag. RAG rag. Write slowly and neatly with good handwriting. लिखा आपने tag, bag and rag. Now what you have to do? Here outside the margin you have to put 3 dots. 1, 2, 3. 3 dots डाला आपने. Okay, very nice. Now why teacher said to put 3 dots? टीचर ने क्यों बोला है 3 dots डालने के लिए? Because this same words you have to copy 3 times. Okay? यहाँ जहाँ पर tag लिखा है below that only you have to write TAG tag. Where you have written bag, BAG bag, उसी के नीचे आपको लिखने का है BAG bag. Where you have written rag, उसी के नीचे आपको लिखने का RAG rag. So same thing you have to copy 3 times. Finish? Okay. Now once you have done, you have to leave 2 lines. टीचर ने क्या बोला है? 2 lines आपको छोड़ना है. Then you have to write next. Next टीचर क्या बोल रही है? Cap.
CAP, cap. You have to say and write. CAP, cap. Write slowly and neatly. CAP, cap. लिखा आपने? Okay? Here you have to left 2 lines. Okay. यहाँ पर लिखा आपने CAP, cap. Okay. Very nice. Now leave little space and write here in the center. Lap. LAP, lap. L, small letter L, A, P, lap. Write slowly and neatly. CAP, cap. Leave little space. Write the next word. LAP, lap. Say and write. Now leave little space. Write the next word. TAP, tap. Small letter T, A, P, tap. Finish writing? Say and write. TAP, tap. CAP, cap. Leave little space. LAP, lap. Leave little space. Write the next word. TAP, tap. Again, what you have to do? Outside the margin, you have to put 3 dots. 1, 2, 3. So, same words you have to copy 3 times. Where you have written cap, below that only write CAP, cap. Where you have written lap, below that only you have to write LAP, lap. Where you have written tap, उसी के नीचे आपको लिखने का है TAP, tap. So, you have to similar way, you have to continue. 3 times ही लिखना है. When teacher said 3 times, that means only you have to write 3 times. Okay, 3 dots डाल के दिया है ना? That means you have to same words you have to copy 3 times. Okay, that's all for today. Okay, टीचर ने क्या पूछा है इंग्लिश राइटिंग में? स्मॉल लेटर A to Z, capital letter A to Z, and copywriting. 3 letter words are there for copywriting. See that you have to write slowly and neatly with good handwriting. Okay? Thank you. Thank you so much, parents, for your cooperation. Thank you, children, for the efforts you all have taken in writing your English writing exam. Stay home, stay safe. Bye. Take care. Love you all.